एवरीवन। सो आज के हमारे इस सेशन का टॉपिक है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, राइट? सो basically the agenda of this session is very first thing we will see what is exactly the application security एंड यहाँ पे किस तरीके का एंड्रॉयड में परमिशन मॉडल है वो सब देखेंगे। एंड एज आई सेड इन द प्रीवियस सेशन कि हम एक एक करके हर एक जो जो मैंने फर्स्ट सेशन में आपको टूल्स बताए थे कि किस तरीके से यूज़ करने हैं या कौन कौन से टूल्स है, वो यहाँ पे हम देखेंगे आज एडीबी यूटिलिटी। ठीक है, सो आज मेन जो मेजर लैब रहेगा हमारा विच इज़ एडीबी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द first topic. So, very first thing is to understand the Android applications elements. So, as a pen tester, we should know कि जो एप्लीकेशन है विच इज मेड अप यूजिंग द एप्लीकेशन एलिमेंट्स। सो हर एक एलिमेंट है जो हैविंग डिफरेंट वर्किंग विद द ओस, राइट? सो ओवरऑल बिहेवियर इन जो डिपेंड करता है वो इन एलिमेंट्स पे ही डिपेंड करता है। सो एज ए पेन टेस्टर वी शुड नो कि ये एलिमेंट्स क्या है, इनका वर्किंग क्या है। अभी ये जो जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ये सब क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं यूजिंग इंटेंट्स। सो बेसिकली इनको कनेक्ट करने के लिए वी यूज द इंटेंट्स। सो इंटेंट्स क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ द आईपीसी, राइट, विच इज इंटर ऐप कम्युनिकेशन। सो ये क्या करते हैं? दीज आर द ऑब्जेक्ट एंड कंटेन द मैसेज इन्फॉर्मेशन जो कि हम यूज करते हैं परफॉर्म करने के लिए कोई भी ऑपरेशन। सो ये जो इंटेंट्स है फर्दर दो टाइप में आते हैं। फर्स्ट होते हैं एक्सप्लिसिट and implicit. Sorry, there will be I in between here also. ठीक है, so ये जो explicit है फर्स्ट वाले, ये जो एलिमेंट्स है विच इज हैविंग ए स्पेसिफिक थ्रू क्लासेस जो कि एग्जैक्ट कंपोनेंट को रन करवाते हैं। एंड इम्प्लिट में स्पेसिफिक एलिमेंट्स नहीं डिफाइंड होते हैं। ये अगेन वी हैव टू रजिस्टर अ कंपोनेंट बेस्ड ऑन द डेटा विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेंट। सो आगे फर्दर ये जो एलिमेंट्स है जो आप देख रहे हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। सो वेरी फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो है एक्टिविटी। सो बेसिकली एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी इज नथिंग इज अ रिप्रेजेंटेशन। जो भी स्क्रीन में आपका यूजर इंटरफेस दिखता है, जो स्क्रीन दिखता है, जो व्यू करते हैं, जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जब फोन किसी को कॉल करना है तो सबसे पहले फोन एप्लीकेशन में डिस्प्ले होता है डायलर। देन वहाँ पे इंटरफेस रहता है जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नेम टाइप करते हैं एंड देन अनदर एक्टिविटी आप या फिर डायल कर सकते हैं नंबर, तो दैट इज कॉल्ड द एक्टिविटी, राइट? सो हर एक एक्टिविटी जो होती है वो एक लाइफ साइकिल में वर्क करती है। जैसे कि एक एप्लीकेशन जब हम स्टार्ट करते हैं उसका एक लाइफ साइकिल होता है विच स्टार्ट फ्रॉम ओन क्रिएशन टू ओन डिस्ट्रॉय, राइट? सो बेसिकली इट इंक्लूड द फर्स्ट थिंग। अगर आप कोई एप्लीकेशन कोई एक्टिविटी स्टार्ट करें तो वेरी फर्स्ट जो होता है द लॉन्च एक्टिविटी। ठीक है, अब ये लॉन्च एक्टिविटी इन्वॉक करती है मेथड को विच इज ए ओन क्रिएट मेथड। ठीक है, तो जैसे आप कोई एक्टिविटी को क्लिक करते हैं तो ये वाला जो मेथड है ये इन्वोक होता है विच इज ए लॉन्च एक्टिविटी। उसके बाद आती है क्रिएट एक्टिविटी। अभी क्रिएट एक्टिविटी क्या होती है? जैसे ही आप ऑन क्रिएट जो लॉन्च एक्टिविटी पे यूज करते हैं या एक्टिविटी को इन्वोक करते हैं, सो उसके बाद जो एक्टिविटी हमारी इन्वोक होती है वो है दो एक्टिविटीज विच इज ओन स्टार्ट एंड ओन रिज्यूम। ठीक है, फर्दर ये टू डिफरेंट एक्टिविटीज मेथड्स है। सो ये दो जो है वो हम यहाँ पे यूज में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है थर्ड इज ए पॉज। ठीक है, अभी ये पॉज एक्टिविटी जब इन्वोक होती है बाय द ओन पोज मेथड से, राइट? एंड आफ्टर दैट ये ओवरटेकन होती है बाय द अनदर एक्टिविटी जो कि ऑन द बैकग्राउंड चल रही है। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज द रिज्यूम। ठीक है, रिज्यूम एक्टिविटी आपकी
जो इन्वोक होती है बाय इन्वोकिंग द ऑन रिज्यूम मेथड। एंड ये मेन पर्पस क्या है कि कोई भी एक्टिविटी जो हमें फोरग्राउंड में लानी है, जो बैकग्राउंड में थी, वो हम इसके थ्रू करते हैं। देन वी आर हैविंग ए stop activities to stop, right? It's invoked by on stop method, right? And this basically this method is used to basically with the help of this method we can just stop any activity which is no longer visible, ठीक है? एंड जितने भी रिसोर्सेज है उनको ये रिलीज करेगा। देन वी आर हैविंग ए रीस्टार्ट। So the restart activity will come from any for what this does basically the process we had stopped. So if we wants to be start that process again, so it is done by the on restart method, right? So the next we are having destroy. So basically destroy activity is by invoking on the on destroy method. So ये कब यूज किया जाता है? दिस मेथड इज यूज व्हेन वी वांट्स टू बी कंप्लीटली एंड द एक्टिविटी। सो यहाँ पे जितनी भी अगेन इंफॉर्मेशन है या रिसोर्सेज है, यहाँ को पूरा का पूरा रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है? सो जो कि ऑन स्टॉप पे नहीं होते हैं। ऑन स्टॉप पे जस्ट एक स्पेसिफिक जो एक्टिविटी है, जो सर्विस है, वो स्टॉप हो जाती है, बट वो हम अगर रिलीज करना चाहते हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी चीजें हैं, वो हम ऑन डिस्ट्रॉय मेथड से करते हैं। सो ये है हमारी एक्टिविटीज: लॉन्च, क्रिएट, पॉज, रिज्यूम, स्टॉप, रीस्टार्ट, डिस्ट्रॉय। सो दिस इज अगेन ए लाइफ साइकिल ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। उसके बाद हम बात करते हैं सर्विसेज। सो सर्विसेज क्या होती हैं? दिस इज अगेन एंड्रॉयड एप्लीकेशन एलिमेंट्स विच कैन बी स्टार्ट एंड द स्टॉप without the user interaction. Any kind of a activity or any kind of a service which doesn't require a human interaction, that is a service. So ये लॉन्ग रनिंग टास्क में होती है जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू रिसीव एसएमएस, डू यू रिक्वायर द ह्यूमन इंटरेक्शन? नो। फॉर एग्जाम्पल द वाईफाई नेटवर्क अलर्ट स्टेटस। सो जहाँ पे भी हमें ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं जरूरत रहती है, वो होते हैं सर्विसेज, ठीक है? सो ये दो तरीके की होती है, एक होती है इनबाउंड, एक होती है बाउंड, ठीक है? अनबाउंड एंड बाउंड। अनबाउंड का मतलब क्या होता है? स्टार्ट सर्विस। सो व्हाट दिस मीन? दैट स्टार्ट द सर्विस एंड जब तब तक चलेगी जब तक कंटिन्यू इन द बैकग्राउंड इवन द ओरिजिनल कंपोनेंट इनिशिएट हो जाता है एंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका टर्निंग ऑन द ब्लूटूथ तब तक चलेगा जब तक वो पेयर नहीं हो जाता या कनेक्ट नहीं हो जाता इन द बैकग्राउंड। एंड देन बॉन्ड सर्विस, वो तब तक कैन बाइंड फ्रॉम वन एप्लीकेशन component to the another using a bind service, ठीक है? तो वो तब तक चलती है जब तक कि वो बाउंड ना हो जाए, और ये तभी डिस्ट्रॉय होगी व्हेन दे आर द अनबाउंड, ठीक है? सो ये दो सर्विसेज हैं जो हम यहाँ पे यूज में लेते हैं। सो द नेक्स्ट इज द broadcast receiver. So again, this is the element that we use in the Android application to answer the system announcement. फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आप प्लग करते हैं हेडसेट या चार्जर या यूएसबी, आपको कुछ अलर्ट स्क्रीन पे दिखता है विच इज़ नथिंग जस्ट ए ब्रॉडकास्ट रिसीवर। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप अपने मोबाइल को पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे मैसेज आता है, डू यू वांट टू शेयर द फाइल और जस्ट टू कनेक्ट। तो वहाँ पे जो नोटिफिकेशन आपको दिखती है वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है। एंड जो परमिशन सेट होती है वो लिमिट करती है application apps को to perform that specific task, right? So that is called the broadcast receiver. So the next thing we are having here is the content provider. So what is the content provider? So basically in Android, एक application cannot share the data to the another application because it's a restriction which is imposed by an operating system, ठीक है? तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द कंटेंट प्रोवाइडर वी कैन शेयर अ मल्टीपल डेटा बिटवीन द मल्टीपल एप्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप यूज करते हैं तो देयर इज रिक्वायरमेंट टू एक्सेस द कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग्स एंड द फोटो गैलरी। तो ये सब चीज़ें किसके थ्रू होती हैं? थ्रू द कंटेंट प्रोवाइडर। सो
इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सो लास्ट सेशन में हमने एप्लीकेशन को डिकम्पाइल किया था, तो वही कोड को यूज कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज द कोड विच वी हैव टू बी लुक फॉर द कंटेंट प्रोवाइडर। ठीक है। सो यहाँ पे अ, जो एप्लीकेशन डिक्लेयर करती है प्रोवाइडर नेम, वो ये रहेगा, विच इज द एंड्रॉयड नेम. So here in our case, the provider name is zakhar.asim.diva.notes provider, and after that the class will provide the content provider, like कौन सी authorities हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी. So here in our case it's showing the zakhar.asim. If other URIs रहेंगी तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगी. So that is a your content provider. So ये है example of content provider. अगर आइडेंटिफाई हो रहा है कोई ऑफर डेटा बाय द कंटेंट प्रोवाइडर. ठीक है. सो दिस इज द कंटेंट प्रोवाइडर. सो basically this was all about the elements. I hope it's clear about the elements: activity, broadcast, receiver, content provider, and the services. Now we are moving forward with the next topic, which is a nothing is a Android permissions. So again it's a very critical. So app permissions, why we use it, support for the privacy to protect the two following things. Very first thing is to restrict our data and to restrict some actions. Restrict data means for what, like such as a system state and the user contact information, like the user personal information, yeah, confidential information. And restrict actions means what, like it prevent the system to access some kind of the to restrict some actions, like when there is a requirement to pair the device and to record the audio. So these are the restriction that we implement using the Android permission models. Again, whenever we are developing any application, so we are using the lot of components, right? So like camera use करें, ये GPS use करें, so obviously these all resources require some kind of the permissions to perform that task, particular task जिसके लिए उनको बनाया गया है. So in that case, when we having these kind of the component and those component required permissions, so we have to implement the protection level. सो ये प्रोटेक्शन लेवल क्या करेंगे, वेन एवर वो पर्टिकुलर टास्क उनको परफॉर्म करना है, दे हैव टू आस्क द यूजर फॉर टू परफॉर्म दैट टास्क. अगर यूजर ना कर बोल देता है नो, सो वो टास्क परफॉर्म नहीं होना चाहिए. तो ये सब कैसे होता है, ये सब होता है प्रोटेक्शन लेवल्स इन परमिशंस. सो जनरली क्या होता है, ये जो प्रोटेक्शन लेवल है, ये अगर देखा जाए, हम जो एंड्रॉयड मैन्युफैक्चर्ड XML फाइल है वहां पे इसको यूज में लेते हैं. ठीक है. आई विल शो यू वन एग्जांपल. सी, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, 3 लाइन है: यूजर परमिशन, एंड्रॉयड नेम, एंड्रॉयड परमिशन डॉट राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज एंड द इंटरनेट. सो हियर डेवलपर हैव टू ऐड द परमिशंस. ठीक है. तो यहाँ पे बताया है कि राइट एक्सटर्नल स्टोरेज का उसको परमिशन ग्रांट किया गया है. द सेकेंड इज द रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज से रीड करने का दिया है. अगेन द इंटरनेट मीन्स this line grants the permissions to the use of the internet. So these are the permission which is had mentioned in into the Android manifest XML file. वो सब यहाँ पे दिए हैं. ठीक है. So again, to do the permission or to assign the protection level, it's not an easy task. We have to decide which permission we have to directly take and which permission we have to ask from the user. It's a very tedious task to assign the permissions or to create the protection level. So when we talk about the permissions, so majorly we are having a three type of the permissions. First, install time. Second, runtime. Third, special. नाउ ये जो 3 प्रोटेक्शन लेवल्स दिए हैं, अभी हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं. ठीक है. सो बेसिकली जो इंस्टॉल टाइम परमिशंस है वो दो हैं: नॉर्मल एंड द सिग्नेचर. अभी जो नॉर्मल परमिशंस है वो कौन सी होती है? सी, ये जो नॉर्मल परमिशन है विच अलाउ डेटा एंड द एक्शन दैट इज एक्सटेंड बियॉन्ड योर ऐप सैंडबॉक्स. एंड अगेन फ्रॉम द नेम इट्स क्लियर, इट्स नॉर्मल. दिस टाइप ऑफ द परमिशंस अगेन
having a no risk to the user privacy, राइट. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई डेट एंड टाइम का चाहिए, या फिर अगेन द डेट एंड टाइम डजेंट हैव एनी यूजर प्राइवेसी इन दैट केस, एंड you can directly use the एडिंग इन द एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल. सो ये सब परमिशंस है, ये इंस्टॉल टाइम पे ही रिक्वायर्ड रहती है, ये ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाती है विद द इंस्टॉलेशन टाइम. सो कुछ एग्जांपल दिए जैसे एक्सेस लोकेशन, एक्स्ट्रा कमांड्स, एक्सेस नेटवर्क स्टेट, एक्सेस नोटिफिकेशन पॉलिसी, वाईफाई स्टेट, ब्लूटूथ एडमिन स्टिकी. ऑन द अदर एंड लाइक ब्लूटूथ हो गया, इंटरनेट है, या सेट अलार्म हो गया, सेट वॉलपेपर है, वाइब्रेटिंग. सो ऑल दीज आर द नॉर्मल परमिशंस. On the other hand, second जो है signature. So if the app declare the signature permission that another app has defined, and if the two apps are signed by the same certificate, then the system grant the application permission to the first app at the install time. So यहाँ पे उन्हीं permissions को grant किया जाता है installation time पे. यहाँ पे ये condition है, ठीक है. So ये app is asking for the some permissions must have signed by the same signature at that is of the top that define the required permissions. ठीक है. So यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, विच इज ए माइंड एक्सेसिबिलिटी सर्विस, ऑटोफिल, कैरियर, डिवाइस एडमिन इनपुट. इसके अलावा लाइक टू राइट इनटू द राइट वॉइस मेल या फिर रीड वॉइस मेल. सो ऑल दीज आर द सिग्नेचर लेवल परमिशन. ठीक है. नेक्स्ट है रन टाइम. सो रन टाइम को जनरली वी ऑल्सो कॉल इट एज ए डेंजरस परमिशंस. सो ये परमिशंस कौन सी हैं, विच अगेन लाइक डायरेक्टली असाइन नहीं होनी चाहिए. दीज परमिशन रिक्वायर द यूजर एक्सेस, लाइक अगर यूजर उस परमिशंस को असाइन कर रहा है या फिर उसको एग्री कर रहा है तो ही वो असाइन होनी चाहिए या उसको एक्सेस मिलना चाहिए. अगर यहाँ पे यूजर डिनाई कर रहा है तो एप्लीकेशन शुड नॉट यूज दैट पर्टिकुलर परमिशन. ठीक है. सो कुछ परमिशंस हैं जैसे कि आपकी फॉर एग्जांपल टू रीड द कॉन्टैक्ट, राइट. Then, for example, send SMS. For example, the receive SMS. इसके अलावा और बहुत चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल द कैमरा, इट्स अ क्रिटिकल वन. सो दीज ऑल परमिशंस आर द रन टाइम अगेन विच इज हैविंग अ कंसर्न टू द यूजर प्राइवेसी. सो दैट्स अ रीजन we called it as a dangerous permission or the runtime permission because it require the user access to allow or to deny. Next we are having a special permissions. So ye special permissions are neither a normal or nor a dangerous. So ye most of these applications should not use these permissions because they are very sensitive. And if a user require these permissions, so application require these permissions, so you it require the user authorization. Okay, so we have to, and the developer have to declare it into the Android manifest file. So the example of these permissions are system alert window and the right setting. So these were the permissions in the Android, which were a three: install time, run time, and the special. Okay, now we are moving further with the next topic, which is the application sandboxing. So sandboxing होता क्या है? Sandbox is nothing is a simple security mechanism जिसके through we make sure like individual Android application run in their own space and एक application दूसरी application जो installed है उसके साथ interact नहीं करती है without proper permissions. Right, so for example I'll give you the very best example. There is a app 1 which is installed and there is a app 2. So without application sandbox, app 1 will have the access all the files and device. Okay, it can modify or delete essential files, and same way the app 1 will create any problem with the app 2, means it can perform any kind of the crash or the malfunctions. So again, you
again you will identify some issues on this app too. Okay, so what we'll do is we will uninstall and continue using the app one, right? So we will try to be uninstall this one. So this is just a part to explain you. So again, the as I said, the Android is built on the top of the kernel, Linux kernel. So it should have some security features, which is like a process isolation. It should have a user based permission model, then IPC, inter-process communication. So application sandbox is nothing is the combination of these features to limit the app to access the other apps and as well the operating system resources. So what it does, the Android assign a unique ID with this. You can see here we are having a unique ID for every app that run onto the separate process. In term, हर एक यूजर जो ऐप यूज कर रहा है इट्स हैविंग ए यूनिक यूजर एंड वो सिर्फ अपना ही पर्सनल स्पेस ऑन द डिस्क यूज कर सकता है एंड विदाउट नेसेसरी ऑपरेशंस इट कैनॉट इंटरेक्ट विद द अदर ऐप. ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं. सो ये करने की जरूरत क्यों है, सो दैट कोई भी मलिशियस एक्टिविटी हैपन ना हो विद दीज टू एप्लीकेशंस. सो दैट is possible with the help of the app sandboxing. When we will do the ADB, I will show you how these UIDs are assigned and how the UIDs are the different for the each of every applications or each and every package which is installed into the system, right? So ये अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से है. मैं अभी बताऊंगी तभी हम इसको यूज करेंगे. So the next is your the binder process. So binder process क्या है? Basically binder is an inter-process communication mechanism. So यहाँ पे क्या होता है, process जो Android में चल रहा है having the separate address space, as I said in the previous, like with the help of the process isolation, having a different address space, that is called the process memory, or sometime as I mentioned is the process isolation, right? So this is called the process isolation. So ये क्यों जरूरी है, so that यहाँ पे stability रहे, security रहे, and multiple processes modify the same memory can be a problematic. So I don't want to be just create a so that एक process same memory को use ना करे. So that is the reason we use this binder. So because of binder, what we does, it is basically developed for the Android. So binder is the abstract of the low level details of the IPC, in which it allow the application to easily talk with the both of the server and the other remote service components. Okay, so that is the binder. So in that, with the binder implementation, one process cannot access to the another process memory. So which is again for the security, which is the kernel has the control for all the access, and again can expose to an interface that enable the IPC, right? So that is the binder process. So the next we are having is the application build process. So what is the application build process? So any Android application system, we compile app resources and the source code, and then we package that particular application into the app, and then that is the APK, or we can say AAAB, which is a Android app bundle. And again, further, if you wants to be test, if you wants to be deploy, you wants to be assign, or you wants to be distribute. So it's totally the wish what you wants to do. Again, let's understand the Android application build process. So the diagram that you can see in the screen is the build process, typically Android app module, right? So again, the build process require many tools and the process that convert our project into an APK or to a AAP. Okay, so this process is a little very flexible, so you will understand how we do that. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला स्टेप है द कंपाइलर कन्वर्ट करता है आपका जो सोर्स कोड है उसको डेक्स में. डेक्स इज डाल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड अगेन विच इंक्लूड योर बाइट कोड दैट रन ऑन द एंड्रॉयड डिवाइसेस.
and everything else into the compiled resources. After that, the packager combine करता है, जो भी packager है वो combine करेगा all the dex file and the compiled resources into the APK or to the AAB, which is again depend on your choose build target. Choose build target means what? Like before you app can be installed on the device or to distribute, the app must be signed. So there are two conditions. Either you want to debug or you release. Okay, if you build a debug version of your app, then app is intended use only for the testing, for profiling. The packager sign your then the packager which will sign your application and with the debug key store, right? So Android Studio automatically configure new project with a debug key store. On the other hand, if you are building a release version of your app, then you intend to release externally. So with that mean the packager sign your application with the release key store that you need to be configure. And to create that, you will release a key store. Okay, which is again we should have the knowledge of signing your application, so that we are going to be see in the future sessions, right? And before generating your final app, the packager use the zipline tool to optimize your app so that the app will use the less memory when you are running that application on your device. So this is the whole building application build process that you should know before going further, right? So this was your application build process, right? So the next thing we are going to be see is the ADB. So what is ADB? So ADB is a simple Android debug bridge. It's a nothing, is just a command line tool which is built into the Android SDK, and with this it is used to bridge communication between your emulator instance, which is again your Android device, and the background running daemon process, which is a server, right? So it's a client server program which having a three component as I mentioned into the screen: the client, daemon, and server, right? So the next thing, how do we can install the ADB in the Linux? So ADB को Linux में install करने के लिए the easiest method is this: apt install adb. I would say इससे ही इंस्टॉल हो जाएगा अगर नहीं हो रहा है इन केस. सो आप डिफरेंट मेथड ले सकते हैं. आप यूज कर सकते हैं डाउनलोड द एंड्रॉयड एस टी के प्लेटफॉर्म टूल्स की जिप फ्रॉम दिस लिंक. एंड जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, आपको क्या करना है, दैट विल बी हैविंग अ जिप फाइल. आपको वो जिप फाइल को अनजिप करना है. देन आपको मिलेगा एक फोल्डर प्लेटफॉर्म टूल्स. आपको विद द cd कमांड इस फोल्डर में जाना है, उसके अंदर रहेगी adb फाइल. आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ द मूव कमांड आपको उसको मूव करना है यूजर बिन में. एंड इफ यू विल टाइप द adb ऑन योर स्क्रीन यू विल गेट दैट. ओके, सो ये था आपका adb. नाउ we will see some of the ADB commands, like how we connect to the device, how we get the shell, how we push the files, how we pull the files, and how we install the apps. So ये सारी की सारी चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं. ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए जेनीमोशन. I will start the जेनीमोशन and we require the parrot. ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, एज आई मैंशनड इन द वाइल लैब सेटअप, कि आपको ये कहाँ पे रखना है, ब्रिज पे रखना है अगर आप VMware यूज कर रहे हैं. तो ये जो है, ये मशीन जो आपने बनाया है एंड्रॉयड इमूलेटर, उसको भी आपको ब्रिज पे ही रखना है. एंड देन हम इसको स्टार्ट करेंगे.
let me log in the device. And the next thing we have to find the IP address. And to find the IP address, I'll go to the wireless settings here, and I will click here advanced, and here you will see the IP address. So for that, here first I will open the terminal. Okay, 1 second. Okay, so first I will go to the root. Okay, so to connect, first I will check devices are connect. Okay, so no devices is connected. So to connect the device, we will use the ADB connect the IP address, and here I have to use the port number. So for example, I'm connecting with the first emulator, so I will use the 555. So on the other end, if you wants to be used with the other emulator, so you will use the 5556. If you wants to be connect with a third emulator, you can use the 5557. So on, right? Now I will check if I can just see the devices. So now you can see here one device is connected. So this way you can just connect your device. Now the next thing, how do we get the shell? So here I will type simply ADB shell. Now you can see the shell is here, right? So this is the shell of your Android emulator. So I will type here who am I. So it's saying root user. So I was discussing about the app sandboxing. So I will show you that as well, what that means. So now you can see here what is the meaning of app sandboxing here. So these all are the packages name, like com.android.calculator, right? So I'll give you the example com dot android dot chrome, and if suppose there is another one which is a calculator, or just take one example which is a browser. So every package is having a unique user ID. See, u0 underscore a22, u0 underscore a22 is the group name. So for chrome it is having a different, which is a52. So every application which is installed over here, like suppose there is a Nika which is having a unique user id, u0 underscore a73 user id and the group id. So the same, this is the concept of how this is sandboxing is implemented. Any application which is installed here having a unique id, so this is called the app sandboxing. So how I can exit from here? Simply you have to write here exit. You will exit from the this file, right? Now I wants to show you one thing. Uh, Forget to ADB shell. So this was the one method which I shown you how we can check the packages. Again, there is a one more command. If you want to put this apm list packages, it will show you all the packages. Like I am using the Zakhar or the uncrackable. So these are all the package name which we required further. ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखने हैं. उसके अलावा the next thing, how we can push the file. So to push the file, ठीक है, मैं ये डाल रही हूँ एक फाइल apt.txt. ठीक है, सो अभी ये जो फाइल है आई वांट्स टू बी पुश इनटू द एंड्रॉयड डिवाइस. सो क्या कमांड रहेगी, एंड्रॉयड सॉरी adb push, एंड यहाँ पे वो फाइल विच इज apt.txt, एंड कहाँ पे पुश करनी है मुझे, डेटा लोकल
and I will push into the temp. ठीक है. Now अभी to make sure कि वो हो गया है, मैं उस फाइल में जाऊंगी which is a data local and temp, and यहाँ पे हम देखते हैं अभी that file is having this is the apt.txt. So to check that, uh, cat apt.txt. So this is the file which we pushed from the parrot to Android. So this way we can just push the file. Same way we can pull the file. There was a one file which is the apk.txt. So how I will pull? I will write here ADB pull, the same way we pushed. We have to mention here the pull, and we have to write here the location data local, and then that file name which was in the temp and apk.txt. Okay, so we get that cat apk.txt. So this is the hello fs. So this file was present into the temp file, so we pulled from that Android device to parrot. So this way you can pull the file. So again, the next thing which we have to understand here is how we can install the application here. So I don't have the Spotify here. Yes, you can see. So we will install the Spotify from this parrot 2. Okay, so simple command adb install and Spotify apk. So this will install the Spotify on your Android emulator from parrot. Now you can see Spotify is installed. So this way we can see all the commands. So we completed with how to connect with the device, how to get a shell, how we push file, how, even though we saw how we list the packages name, how we pull the file, and how to we install the apps. So this was about this session. So we completed with the three things: application security, the Android application permissions model, and the ADB, which was a utility that I wants to UP to make familiar with that. So this was about this session. So thank you guys.